अभी मैं ग्रोसरी के लिए आया हुआ था और मैंने कहा कि एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं कि क्या हाल है इन्फ्लेशन का, क्या प्राइसेस की सिचुएशन है यूएई के अंदर। आपको इससे कंपैरिजन मिल सकता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सारी जो ग्रोसरी लिस्ट होगी मैं आपको एक एक चीज़ की जो है ना प्राइस भी बताता जाऊँगा यहाँ पर। और इस वक्त पाकिस्तानी रुपी जो है वो 53 का है, आई थिंक इक्वल टू 1 यूएई दिरहम। तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की प्राइसेस क्या हैं और यहाँ की प्राइसेस क्या हैं। इसके अलावा आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन का फिगर आया है इस वक्त यूके के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, इनफैक्ट हर जगह ही आ रहा है। तो आपको वहाँ का भी आइडिया हो जाएगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं कि आपको यहाँ पर जो प्राइसेस मैं आपको दिखाऊंगा उसमें और अपने जहाँ पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पर क्या कंपैरिजन मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर आई एम श्योर इम्पोर्टेड आइटम्स की खास तौर पे प्राइसेस ज़्यादा होंगी। जो नॉर्मल कमोडिटीज़ हैं, सब्जियाँ हैं या दूध है, उसमें शायद इस तरह का फ़र्क ना आए। तो विदाउट फर्दर डू अंदर चलते हैं। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better. Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने कहा कि इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि अभी हम जाएंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाले सेक्शन के अंदर। इसके अंदर आप नोट कीजिएगा कि यूएई के अंदर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, इस ऑल्दो के बिल्कुल ड्राई एरिया है, ये डेजर्टेड है, लेकिन फिर भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइक टोमेटोज़ हो गए या खीरा हो गया, क्यूकम्बर या और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ पर, इवन कैप्सिकम, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको यूएई ग्रोन मिलती हैं। और मैंने बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इसी तरह है, मतलब कोई ऐसा सीज़न नहीं मिलता जहाँ पर मुझे यहाँ की लोकल ग्रोन वेजिटेबल्स ना मिलती हूँ। सो इसके लिए पर्सनल फाइनेंस में भी एक आपके लिए लेसन है जो कि मैं आखिर में बताऊँगा। अभी हम इस सेक्शन की तरफ चलते हैं। सो फेमस ऑफ ऑल नोट्स आप निकल आइए ग्रोसरी लिस्ट के लिए। living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.
days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better. माई गिल्टी प्लेजर, और ये नॉर्मली ग्रोसरी का पार्ट बन जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर आई एम श्योर ये इस वक्त बहुत सस्ती होगी सॉफ्ट ड्रिंक, जबकि यूएई के अंदर ये कुछ अर्से पहले, तकरीबन 3-4 साल पहले से इन्होंने ये महंगा करना शुरू कर दिया था। और एक ज़माने में जो ये बॉटल लेट से 1.5 लीटर की बॉटल है, ये आई थिंक कोई 2 दिरहम की मिलती थी, अब ये 5 दिरहम की हो गई है। और इसी तरह जो टिन होता है, जो कैन होता है, वो 330 ml का, जो किसी ज़माने में 1 दिरहम का होता था, वो अब ये 2.5 दिरहम तक का मिल रहा होता है। तो इस तरह से पाकिस्तान से ये इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगा है। और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सेंट टैक्स कहते हैं वो लगा है, और जिसमें एक्साइज और टैक्स और ये सारी चीज़ें मिलाकर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हो गई, जो शुगरी ड्रिंक्स हो गई, इवन उसके अंदर ऑल्दो के मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर उस तरह से टैक्स नहीं लगा है, लेकिन जो शुगर कंटेंट जिनमें ज़्यादा होता है जिन चीज़ों में, उन चीज़ों में उन्होंने सही वाला टैक्स लगाया, तो वो चीज़ें महंगी हो गई। इसी तरह से टोबैको के अंदर भी एक ज़माना था कि यूएई के अंदर टोबैको बहुत सस्ता होता था और लोग यूके जाते थे तो यहाँ से डंडे लेके जाते थे, लेकिन अब वो सिनेरियो भी ख़त्म हो गया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महंगा हो गया है। अब आपको मैं फर्दर लेके चलता हूँ। Not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm मिल्क का ये है कि ये अभी आपको जो यहाँ पर मैं मिल्क दिखा रहा हूँ, तकरीबन ये 4 का पैक, जो टेट्रा पैक है, ये तकरीबन कोई डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो डील लगी हुई है, ये आजकल मिलता है 15 दिरहम से लेके 20 दिरहम के दरमियान का। लेकिन ये किसी ज़माने में आज से कोई 2 साल पहले ये आराम से 10 दिरहम के 4 पैक्स मिलते थे। तो महंगाई इस तरह से देखें तो ऑलमोस्ट, इस तरह की चीज़ों में देखें तो ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर हो गई है। work hard or live at my pace. You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome, but try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate.
celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on मैं पेट्रोल पंप आया था। पेट्रोल पंप के ऊपर मुझे बताना था कि भाई ये एक बहुत बड़ी कमोडिटी है पेट्रोल, जो कि किसी ज़माने में मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट कोई 140 दिरहम 50 दिरहम्स के अंदर फिल हो जाती थी। अब ये कोई 270 दिरहम्स में फिल होती है। तो यानी कि ऑलमोस्ट कोई 2.5 दिरहम का मिनिमम पेट्रोल मिलता था, या इससे भी सस्ता मिलता था। 2 दिरहम तक का भी मिला है मैंने, बल्कि पहले तो बहुत सस्ता मिलता था, लेकिन 2.5 दिरहम तक का भी कोई 6-8 महीने पहले तक मिल रहा था। और अब इस वक्त 350 का मिल रहा है, 3.5 का मिल रहा है। और ये सबसे सस्ते वाले पेट्रोल का बता रहा हूँ मैं, सबसे सस्ते वाला पेट्रोल लेता हूँ। इसके ऊपर कभी और बात करेंगे कि गाड़ी की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं देखता हूँ मेरी अच्छी खासी 3.5 लीटर की गाड़ी है, लेकिन मैं उसको फिर भी इतना एफिशिएंट कर लेता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स एज वेल। तो मैं उसकी बेसिस के ऊपर इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा लेता हूँ। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ पर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलती हैं वो आपको यहाँ की होम ग्रोन मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो उसमें लेसन क्या है आपके लिए? उसमें लेसन ये है कि देखें जो फूड स्कैरसिटी है। अब मैं मैक्रो की बात नहीं कर रहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा। मैं डेफिनेटली ये कहूँगा कि हर मुल्क को अपने रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। एक पॉइंट पर यहाँ पर ये डिबेट होती है कि जो जिन सब्जियों में या फलों में पानी बहुत यूज़ होता है उसको कम से कम आप यूटिलाइज़ करें पानी को, या इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करें जहाँ पर पानी का यूज़ कम से कम हो, और यहाँ यूज़ हो भी रही है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको रोका नहीं जा रहा। थ्रू आउट जब से यूएई को मैं देख रहा हूँ इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए अपनी इनपुट को कम करते हुए और आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें कि यहाँ पर इसके अंदर ऑल्दो कि उनको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा होगा जितना किस लेट से ऑयल बेचने में हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ों को जो कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी वक्त भी अगर दुनिया में कोई मसला होता है तो आपके पास फूड का सबसे बड़ा मसला हो सकता है, पानी और खाने का सबसे बड़ा मसला हो सकता है। तो वो ऑल्दो कि उसके अंदर कोई मेजर शायद उनको प्रॉफिट ना हो रहा हो, लेकिन हर चीज़ प्रॉफिट के लिए नहीं होती, हर चीज़ गेन्स के लिए नहीं होती। मैं इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी बात करता हूँ कि हर चीज़ में आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे रिटर्न मिलें। अब आप इसमें देख लें कि हो सकता है पाकिस्तान की रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर इतने रिटर्न ना मिल रहे हो, लेकिन ये जो पीस ऑफ माइंड होता है ना, एक बैक ऑफ माइंड जो पीस ऑफ माइंड होता है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट का आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेना चाहिए, लेकिन रिस्क के साथ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीस ऑफ माइंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो वो आपके सर का दर्द बन जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ हर चीज़ को डाइवर्सिफाइड करके रखें, और पीस ऑफ माइंड से ज़्यादा कोई भी चीज़ बेहतर नहीं होती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने प्रोडक्टिविटी की बात की थी कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, यहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बात की थी कि इन टर्बुलेंट टाइम्स के अंदर आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर आप उस वीडियो का लिंक लगा पाए, आप उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।